नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अब हम शुरुआत करते हैं इस स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पार्ट 4 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। ठीक है, बेसिकली डिस्प्यूट होने के कई सारे रीजन होते हैं। कई बार आपको जो आप काम कर रहे होते हो उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलता। अलग अलग अगर आपकी फैसिलिटी की बात करें तो हाइजेनिक हेल्दी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से होनी चाहिए कि आपके वर्क इफिशियंसी को बढ़ाए। अगर उस तरीके से नहीं होता, एक रिस्पेक्ट की बात होती है, कई तरह की काफी सारे विषय होती है डिस्प्यूट्स के। कुछ अप्रोच जिसके थ्रू जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है वो अलग अलग है। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग है, जिसे बेट्राइस बेब ने 1891 में इंट्रोड्यूस किया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दोनों आपस में बैठ करके एक क्या बीच का रास्ता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। It takes place when representative of labor union meet management representative to determine employer wage and benefit or to solve other such issue. It can be viewed as a process of social change, as a peace treaty between union and management, a system of industrial jurisprudence, code of discipline. कोड ऑफ डिसिप्लिन में क्या डिफाइन किया जाता है? डिफाइंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. It help to ensure that right and obligation of both parties can be recognized, promote constructive cooperation between the employer and employees, eliminate all form of coercion, intimidation and violence in IR, avoid work stoppage. The General Code of Discipline is evolved with the Ministry of Labor and Employment, जिसका अभी चार्ज जो है भूपेंद्र यादव के पास है। ग्रीवियंस प्रोसीजर, ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या होता है? ऑल लेबर agreements contain some form of grievance procedure and both parties if follow this procedure any dispute can easily be resolved. A grievance can be employee's feeling of personal injustice relating to his or her employment relationship. Grievance may arise due to violation of company's rule, variation of law, change in working condition, violation of healthy and safety standards in organizational setup. Arbitration क्या होता है? Arbitration एक प्रोसीजर है in which a neutral third party studies the bargaining situation, listen to both the parties and gathers information and then makes recommendation that are binding on both parties to dispute. It is relatively expedition when compared to court on the skills of arbitrator. Section 10A of Industrial Dispute Act 1947 provides for arbitration. Arbitration is voluntary. आर्बिट्रेशन जो है कंपलसरी नहीं होता, वॉलंटियरी होता है। भैया आपकी इच्छा है, इच्छुक हैं आप इस चीज के लिए तो करवाइए, अदरवाइज इट्स नॉट अ कंपलसरी। कॉन्सिलेशन, इट इज ए लीगल और मैंडेटरी। कॉन्सिलेशन जो है वो मैंडेटरी है और लीगल है, जबकि आर्बिट्रेशन क्या है? वॉलंटियरी है। इट इज ए प्रोसेस by which representative of worker and employees are brought together before a third party with a view to persuading them to arrive at an agreement by mutual discussion between them. The third party may be one individual or a group of people. Section 4 of Industrial Dispute Act 1947 provides for appointment of conciliation of officer to resolve the grievance. The conciliating officer shall submit his her report within 14 days from the date of commencement of conciliation processing. Adjudication क्या है? When the parties to a dispute fail to resolve their conflict through other method, they resort to adjudication. Adjudication means a mandatory settlement of an industrial dispute by a labor court or a tribunal. It is a lengthy process and restrict the role and right of trade unions. Section 10 of the Industrial Dispute Act 1947 provides for reference of a dispute to labor court. लेबर वेलफेयर लेजिस्लेटिव एक्ट, अलग अलग एक्ट आए जो कि लेबर वेलफेयर से रिलेटेड बने, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया। calls for employer to provide canteen, rest and lunch room, creches, medical aids, drinking water, etc. for employers. Employer state insurance
एक्ट आया 1948 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार आपसे डेट पूछ ले जाते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी 1948 में आया। एम्प्लॉयज प्रोवाइड मेडिकल बेनिफिट इन फॉर्म्स ऑफ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ड्रग्स एंड इंजेक्शन टू इंश्योर्ड एम्प्लॉयज एंड फैमिली। ECI, Employee State Insurance Act 1914, applicable to non-seasonal factories using power and employing 10 or more persons। ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF फंड एक्ट 1952 में आया। प्रोवाइड्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी पेमेंट स्कीम एक्ट जो है 1947 में आया। Provides for payment of gratuity at a rate of 15 days wage for each serving year, subject to a maximum of rupees 3.50 lakhs। Works Compensation Act आया 1923 में। Beginning of Social Security in India was made with the passing of this act. It provides for payment of compensation to workmen in case of industrial accident and a certain occupational disease। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया। It is an indemnity for the loss of wages incurred by women who voluntarily go on leave before childbirth and later few months for taking care of herself and child। E-Office initiative of GOI Government of India. The vision of E-Office is to achieve a simplified, responsive, effective and transparent working of all government offices. E-Office is built on open architecture platform which enable it to be a reusable framework that can be replicated across the government at central, state and district level। GRI Green Reporting Initiative Standard. The GRI standard provide a holistic framework that addresses broad performance, social, environmental and economic as to how a organization is reporting to a stakeholder। Organization can be used GRI Green Reporting। GRI का फुल फॉर्म है ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। GRI रिपोर्टिंग ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI to help measure and benchmark performance both against their own target and externally। Sustainability reporting. Sustainability reporting for business is all about the triple bottom line: people, plant and profit। Top 7 theories of wage fund theory एडम स्मिथ ने इसे दिया। ठीक है। According to Adam Smith, the demand for labor and rate of wage depend on the size of wage fund. Accordingly, if the wage would be high and vice versa। Substance theory Davis Ricardo ने दिया। According to this, the laborers are paid to enable them to subsist the perpetuate the race without increase or diminution, also known as iron law of wages। Residual claimant theory according to Francis A. Walker 1840 से 97 में बना। According to Walker, there are 4 factors of production or business activity: land, labor, capital and entrepreneurship। Residual claimant theory Francis A. Walker ने दिया। According to Walker, there are 4 factors of production or business activity: land, labor, capital and entrepreneurship। According to this theory, worker is residual claimant। Marginal productivity theory is a Philip Henry Wicksteed and John Bates Clark ने दिया। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको wages is determined based on the production। ठीक है। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस आपको जॉन डेविडसन ने दिया बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द फिक्सेशन ऑफ वेज डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स। इफ वर्कर आर स्ट्रॉन्गर इन बार्गेनिंग प्रोसेस, then wage tend to be high। Behavioral theories of wages based on research study the action program conducted. Some behavioral scientists have also developed theories of wages based on employee acceptance at wage level, the prevalent internal wage structure, employee consideration, wage, salaries and motivators। ये था स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। आप इसी तरीके से जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ। जितने भी पेपर 2 के यूनिट है सबको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पे हम वीडियो बनाएंगे आपके फर्स्ट रिवीजन के लिए। धन्यवाद।